इंग्लिश में एक कहावत है, टू मच कनिंग ओवर रिचेस इटसेल्फ। इसका मतलब है जो ज्यादा चालाक होते हैं वो खुद अपने जाल पे फंस जाते हैं। मेरे को और एक देसी कहावत याद आ रहा है आज, वो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो आप सोच रहे होंगे चंद्रिल का क्या हो गया, आज अचानक से ये सब कहावत बोलने लगे, कोई जियोपॉलिटिक्स में कुछ हो गया क्या? बिकॉज दोस्तों, ट्रम्प अंकल का एक डिसीजन सोया हुआ इंडिया को जगा दी और रिजल्ट mother of all trade deals. Hi, I am Chandril, your SEBI-registered market analyst and investment coach. आज मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रम्प अंकल ने इंडिया ईयू ट्रेड डील को फैसिलिटेट किए हैं और कैसे प्रेशर में आके इंडिया यूएस ट्रेड डील को अचानक से अनाउंसमेंट कर डाली। क्या है यह मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स और इसमें इन्वेस्टर्स को क्या मिल सकते हैं, और यूएस इंडिया ट्रेड डील कैसे इंडियन बजट को इन्फ्लुएंस किया, और इंडिया हाउ कैन इंडिया टेक एडवांटेज ऑफ दीज टू मेगा ट्रेड डील, सब कुछ आसान भाषा में समझाएंगे और साथ में बताएंगे कहां पे इन्वेस्टर्स को फायदा है और किस किस चीज के बारे में इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना पड़ेगा। सो लॉट टू नो एंड डिस्कस, लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको 2 मिनट पे समझाता हूं इंडिया ईयू ट्रेड डील क्या है, इंडिया यूएस ट्रेड डील का रियल प्रेशर एंगल क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है दैट इस साल जो बजट आया वो बजट ऐसा क्यों आया, यह भी समझना जरूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द वार्निंग दैट आई एम गिविंग टू यू दैट ये डील अभी तक साइन एंड एक्सेप्टेड नहीं है, इट इज जस्ट द निगोशिएशन का कंक्लूजन है और ईयू में आगे जाके ये काउंसिल अप्रूवल के लिए डाला जाएगा, लीगल रिवीजन होंगे, 24 अप्रूव्ड ईयू लैंग्वेज पे ये डील ट्रांसलेट किया जाएगा, उसके बाद ये एक्सेप्टेंस के लिए जाएंगे। यूएस पार्लियामेंट में भी ये डील को पेश किया जाएगा और डिस्कशन होगा, इंडियन पार्लियामेंट में भी डिस्कशन पेंडिंग है। तो हाइप को समझिए बट ब्लाइंड एक्साइटमेंट पे मत जाइए। सबसे पहले जान लेते हैं इंडिया ईयू डील में क्या है, बहुत समराइज वे में। 90% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट्स विल गेट जीरो टैरिफ इन ईयू, जिसका आज का लगभग वैल्यू है अराउंड 33 बिलियन। ईयू नॉन टैरिफ बैरियर्स का रिडक्शन होगा, एनहांस्ड सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट एक्सेस इन ईयू। बाइलैटरल ट्रेड बाय 2027 हिट करेगा अराउंड $140 बिलियन, जो 2032 तक डबल होने का एक्सपेक्टेशन है, अराउंड $300 बिलियन का एक्सपेक्टेशन है, सो दैट ईयू कैन कंप्लीटली अप्लाई देयर स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना +1 वेयर इंडिया वुड बी द पार्टनर। ये डील डजंट मेक एनी मेस विद द सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर और डेयरी। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली ये डील किए हैं, कोई पॉलिटिकल सुइसाइड किए नहीं है। अब क्विकली देख लेते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील में क्या है, but I am clarifying it at the very first point. Whatever has been captured from the Donald Trump's tweet and media जो information दिए हैं multiple time पे, इंडिया का टैरिफ जो 25% था वो घट के 18% हो जाएगा और 25% का जो पेनल्टी लगा था वो 25% पेनल्टी वेव्ड ऑफ है। यूएस इंडिया में एक मेजर एग्रीकल्चरल ब्रेक थ्रू किए हैं। इंडिया हैज एग्रीड net zero level tariff to tree nuts, cotton, soybean oil, industrial products, automobiles, wines, dairy and energy. So जो एग्रीकल्चर एंड डेयरी जो ईयू के साथ जो डील पे इंडिया कीप इट स्मार्टली अनटच्ड, यूएस में प्रोबेबली दैट वाज द पाइवोटल पॉइंट। एनर्जी शिफ्ट के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो क्लेमिंग दैट इंडिया हैज कंफर्म्ड दैट दे विल नॉट बाय फर्दर रशियन ऑयल, बट रिसेंटली रशिया ऑल्सो communicated through media that India is free to take any decision, there is no commitment as such. And finally, that American commitment जो इंडिया ने किए हैं, so India actually try to make the purchase of US goods and commodities to 500 billion by 2030, अगले 5 साल में
in US energy, coal, technology, agriculture and other products, and prioritizing them in government and industrial procurement के through. But still there would be lot of information to come because government of India not yet published the real deal draft. अब मैं क्विकली कवर करेंगे इंडिया EU ट्रेड डील में क्या क्या ओपन अप हो रहा है और इंडिया का फायदा कहाँ कहाँ पे है. The EU will cut the tariff 99.5% of the goods traded over 7 years. With tariffs to be cut to zero on Indian marine products, leather, textile products, chemicals, rubber, base metal and gems and jewelry. इसमें ज़्यादातर जो है वो यूएस में 50% टैरिफ में फंसा गया था, तो एक्चुअली यू में सबका ऑलमोस्ट फ्री एंट्री मिलेगा. लॉन्च के टाइम पे ईयू विल स्क्रैप ऑल द टैरिफ्स ऑन 90% इंडियन गुड्स. मतलब इस साल जब ये डील पास होके लागू होंगे then 90% of the Indian goods will get zero tariff, extending to 93% within 7 years time. EU average tariff rate falls from 3.8% to 0.1%. Tariff will be cut to zero on Indian exports including marine currently up to 26%, chemicals 12.8% of the exports, leather footwear 17%, textile 12% and apparels 4%. For EU exporter, Indian tariff on 30% of goods traded with EU will fall immediately. इसका मतलब है 90% of the EU exports में India will give them immediate tariff relief. Because of that, EU firms will save 4 billion euros यानी $4.74 billion per year in duties. India completely scrapped the tariff on most industrial import from EU including machinery and electrical equipments जो currently 44% of the export component, chemicals जो 22% of the export components and pharmaceutical जो 11% of the export components. Now थोड़ा सा पॉलिटिकल इम्पैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ये डील इतना दिन से लास्ट 2 decades it was not progressing at all, but suddenly what happened जो इतना फास्ट मोड पे आ गया एंड द डील गॉट फाइनलाइज्ड बिकॉज दिस डील जितना इंडिया को चाहिए था उससे ज्यादा ईयू को चाहिए था to get an alternative market where they are facing challenges in Europe and the supply chain uncertainty with China. Furthermore, India has proposed that this deal will be done in the local currency. मतलब इंडियन करेंसी के साथ EU का यूरोप में डायरेक्ट ट्रेड डील होंगे बाईपासिंग डॉलर. नाउ आपको समझ में आ गया ना that why Donald Trump suddenly comes into the pressure. Because India started challenging the dollar hegemony. मैं और एक चीज बता रहा हूं आपको बहुत इंटरेस्टिंग है. 2023 में इंडिया G20 समिट होस्ट किया था. आई होप यू ऑल रिमेंबर. उस समिट पे देयर वाज एन एग्रीमेंट अबाउट एन इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर जिसका नाम था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IEEEC. जो कॉरिडोर was part of the China plus one policy to maintain the supply chain flow and reduce the volatility in the supply chain because COVID के time पे that has been faced by all the markets. Okay. Now, जो EU who was heavily dependent on China for their goods and services, they need this corridor badly. Now, funny part is the Biden administration was also very keen to have this deal between India and Europe so that through Middle East, India can pass their goods and commodities to Europe and vice versa. इसमें US का भी फायदा था. But Uncle Trump, because of his Himalayan ego and personal interest, made this US-India deal so complex. या EU का जो discussion चल रहा था slowly, वो suddenly speed up हो गया because US suddenly started realizing that जो US who are earlier very in favor of the deal between and this corridor, but suddenly because of Trump's and whose personal interest with Pakistan, probably that comes into a question.
एंड यू कैन ऑल्सो रेफर दैट हमास का जो अटैक हुआ था इसराइल में, जो हुआ था एग्जैक्टली आफ्टर द 3 months of this particular corridor being announced, which at that time was decided that probably to stop India to have this corridor and the deal. Okay, now India इस डील के जरिए एक तीर से दो निशाना लगाया, बिकॉज बांग्लादेश एंड पाकिस्तान जिसका मैक्सिमम एक्सपोर्ट कमोडिटी वाज टेक्सटाइल, and they are getting the huge benefit in EU under the LDC umbrella. LDC का मतलब है least developed countries. इसका मतलब है they are getting zero tariff entry in EU domestic market just to support their own domestic economy. But that actually going to end in 2026, and they will again face a kind of a tariff of around 12.5% लगभग. Now इसका मतलब क्या है? That Indian textile has the tremendous opportunity to grab the US market, to grab the EU market and to catch up the gap that will be created when this LDC status of Bangladesh and Pakistan will go. And meanwhile, Bangladesh में जो अभी का जो हालत है उसमें textile was the worst suffering industry there. तो समझ रहे हो आप that इसमें इंडिया का फायदा ही फायदा है, and sometime crisis creates an opportunity for you. अब मैं क्विकली समझाएंगे कैसे इस साल यूनियन बजट ऐसा आया, बिकॉज इफ यू आर फॉलोइंग दीज टू मेगा डील्स फॉर सम टाइम क्लोजली, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था जब बजट में क्या क्या चीज़ इस साल आने वाले हैं. मैंने ऑन दिस टॉपिक हैव क्रिएटेड अ वीडियो अर्लियर ऑन बजट एक्सपेक्टेशन, आप देख लो, लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. उसमें आपको समझ में आ जाएगा दैट हाउ इट हैज प्लान्ड मच बिफोर व्हाइल दिस डील डिस्कशन वाज गोइंग ऑन. नाउ क्विकली टेकन अ फ्यू ऑफ द अनाउंसमेंट फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर. फाइनेंस मिनिस्टर ने हैज अनाउंस्ड दैट द फोकस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग. फोकस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग में फर्स्ट थिंग वाज द बायोफार्मा शक्ति जो स्कीम आया था, 10,000 crore over 5 years for biologics and biosimilar production, 3 new NIPERs, 7 upgrades, 1,000 clinical trial sites to position India a global hub. ये exactly जो announcement आया था. तो now इसका मैं explanation दे रहा हूँ. This is the key to maintain the dominance in US and EU market to take lion's share of their domestic pharma. Because for Indian pharma companies, the Food and Drug Administration US, FDA and EMA, European Medicine Agency का जो typical rules and regulation था, that always create a hurdle to sell Indian pharma products in both of these two markets, US and EU, and the quality challenges and all this stuff. So through this initiative and the deal with EU, India actually created an opportunity so that India can bypass this regulation easily, and the biopharmaceuticals offer superior therapeutic benefits over traditional drugs through high specificity, targeting disease causing molecules with fewer side effects and lower toxicity can easily pass these regulations जो guidelines है. So इसका मतलब है this pass the norms and make the pharma to grab the majority of the market share in both of these markets, US and EU together. Then comes our announcement on the semiconductor part, semiconductor boosting and promotion. 40,000 crore to cover the supply chain including equipments and materials and design. ये था announcement. अब इसका benefit कहाँ पे आएगा देखिए. US is the global technology leader in semiconductor. By the trade deal, advanced US technology migration and know-how will transfer and will be easier for government of India in preparing domestic industry to be capable enough to get benefit of this transfer. इसीलिए इतना बड़ा amount investment किया जा रहा है on semiconductor. अब मैं आ रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट में क्या अनाउंसमेंट आया था. अ डेडिकेटेड स्कीम टारगेटिंग हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग टू रिड्यूस द इंपोर्ट्स एंड एनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस, जिसमें आया था कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट CIE, जो न्यू स्कीम फॉर एडवांस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. The 2 mega deals will increase more trade and business through and from India, where Indian ports are to be used and domestic and coastal logistics will play a major role. ये सब क्या आने वाला है, क्या बेनिफिट होगा.
So for that, construction and multimodal transportation hubs, logistic centers required along with the high-speed corridor rail, roads, waterways and airports. Is there any of such announcement in the budget? Yes, 7 new high-speed corridor, rail corridor has been announced, right? Just to support the international ports and domestic logistics sector because of these two deals. Now, container manufacturing. 10,000 crore over 5 years for global scale capacity development. Containers are the requirement of transportation of goods across the globe. I mentioned that India, Middle East, European Economic Corridor was the main transport corridor for this deal to make it successful, and that is already on the card. So you have trade deal with UAE already, EU and US already there. Now India is focusing other small Middle East markets to have the free trade agreement. So India is actually moving towards to make a completely duty-free movement of the goods from India to Europe. And this needs a transportation of huge amount of goods from India and to India. So need more containers. Hence, budget has announced a specific package for the container manufacturing. Then comes your chemical parks. Many of the experts already might have told you that Indian chemical industry will be the major gainer from these two deals. Now, मैं बताता हूँ कैसे. So, what has been announced that support of 3 cluster-based park, 600 crore initially has to be invested. India-EU deal has given Indian chemicals duty-free access to 27 countries. Now, that needs huge chemical demands, and cluster-based chemical parks will produce that. Hence, the announcement comes in the budget. The last one is the rare earth corridor. So, suddenly why India announced a specific rare earth corridor related announcement in Indian budget. So, what was there in the announcement? Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu will have the mining, processing and manufacturing. Now, you all know the majority of the rare earth business across the globe is controlled by China, and that was the moot point of US and China tension in the recent time. So, rare earth magnets required for advanced technology, semiconductor, EU segment, car chips, space technology, advanced defense manufacturing, etc., etc. So, India, US, EU trade deal make it easier to get advanced US and Western technology to manufacture advanced component to reduce the dependence on Chinese supply, and hence the announcement. Now, all these things will be unsuccessful unless your MSME sector is strengthened, because they will actually play the major supplier and the major player in these deals on the nitty-gritties and tidbits of the entire movements of the goods and commodities. Okay. Now, there was an announcement on the MSME and cluster-based revival in the budget. So, what was the announcement? That efforts were rejuvenated, the legacy sectors empowered the small player and supply chain anchors. So, उसमें legacy industrial clusters जो था, उसमें scheme of 200 clusters, infra and technology upgrades need to revive existing manufacturing capabilities to meet the higher demand and boost economic prospect. Efforts are directed to develop a comprehensive ecosystem of industrialization. नहीं होगा तो आप produce नहीं कर पाओगे, आपका जो opportunity आया opportunity चला जाएगा. ठीक है. Then comes the championing MSMEs. 10,000 crore SME growth fund and 2,000 crore top up for self-reliant India and fund for equity and risk finance. So, this is critical for the important to supply chain backup to support the big infrastructure to maintain the edge in global trade and supply chain. तो इतना fund आप smoothly MSME में pump in नहीं करोगे तो MSME cannot deliver because they are having huge fund crunch. Textile integrated program, textile के बारे में नहीं बोलेंगे तो major portion covered रह जाएगा. So, textile में एक announcement था that there was the covered fibers, cluster, sustainability and samarth 2.0 skilling for the jobs creation. क्यों चाहिए? Textile is a labor intensive industry and textile will be the next jackpot for India to lead the world because US and EU दोनों market में India को एकदम खुला छूट मिलेगा for textile exports and textile export को पकड़ना है तो आपको उसका जो लेबर उसको अपस्किल करना पड़ेगा, जो सप्लाई चेन चाहिए
टू हैव द प्रोडक्शन उसको इंश्योर करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन ड्रीम टू बी द सेकेंड टॉप एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। एंड इसी के कारण देयर वाज अ PLI एक्सपेंशन and aim to cut import dependence while generating jobs in labor intensive areas like textile. So अभी आपको समझ में आ गया that क्यों बजट में ये सब अनाउंसमेंट किया गया था, because everything was there in the India EU trade negotiations and India US trade negotiations. अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो आपका मन में है जो ये सब डील से, ये सब बजटरी अनाउंसमेंट से इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू नाउ दैट क्या कौन सा स्टॉक कल चेंज होगा वगैरह वगैरह, बिकॉज एक हफ्ता हो गए, आप लोग भी देखे हो मार्केट कैसे बिहेव किए हैं। सो मैं उनमें से कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई करके आई हैव डन सम ऑफ माय एनालिसिस, और वही एनालिसिस मैं अभी शेयर करने वाले हैं विथ यू, सो दैट यू विल बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर एंड डोंट इन टू द ट्रैप। ओके, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं जो सेक्टर बिकॉज ऑफ दिस टू डील बेनिफिट में आ सकते हैं, उनमें से टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा बायोटेक, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में दे हैव शोन सम रैली इन द लास्ट 1 वीक एंड द रेंज ऑफ द रैली वाज 60% टू एज लो एज 2%। इसका मतलब है मार्केट हैज रेस्पॉन्डेड अगेंस्ट द अनाउंसमेंट फ्रॉम बजट एंड देयर इज अ सिनर्जी बिटवीन बजटरी अनाउंसमेंट एंड द प्रॉमिस दैट दीज टू मेगा डील हैज गिवन। तो इसका मतलब है डील के हिसाब से, बजट के हिसाब से मार्केट रेस्पॉन्ड किए हैं। तो ग्रैब बाय द इंडियन कंपनीज इन अपकमिंग 5 to 6 years टाइम, लेट डिस्कस दैट क्विकली। जो सेक्टर बेनिफिट में है उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वो देखते हैं। तो टेक्सटाइल कंपनीज EU एंड US, जिसका जो मार्केट साइज गोइंग टू बी 217 बिलियन ईच बाय 2030। सो आफ्टर दिस डील India has the full opportunity to increase its current share of 7.2 billion and 11 billion respectively in EU and US to 40 billion and 50 billion, because बांग्लादेश एंड पाकिस्तान का जो स्पेशल स्टेटस है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। एंड सिंस इंडिया हैज द सेल्फ सफिशिएंसी इनटू द सप्लाई चेन ऑफ कॉटन, सो इंडिया हैज द ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब दिस मार्केट। सो इसका मतलब है दैट ये सेक्टर के पास अपॉर्चुनिटी है, मतलब एनी स्टॉक ऑफ दिस सेक्टर गिव मी द रैली, आंसर इज नो। लास्ट एक वीक में, आई डोंट नो वेदर यू हैव एनालाइज दिस, 65 टेक्सटाइल स्टॉक्स हैज सोन द रैली, बट आउट ऑफ द 65 टेक्सटाइल स्टॉक्स ओनली 9 स्टॉक्स हैज द पॉजिटिव बिजनेस हेल्थ। इसका मतलब है इन द लॉन्ग टर्म यही 9 स्टॉक की बेनिफिट करने वाले हैं, बाकी सब में फिर से गिरावट आ जाएगा। तो आपके पास ये स्पेशल 9 स्टॉक फ्रॉम टेक्सटाइल सेक्टर है ना? प्लीज राइट इन द कमेंट इफ यू ऑलरेडी होल्डिंग देम। ओके, नाउ फार्मा पे आता हूं। फार्मा कंपनीज टू ग्रैब 80 बिलियन US मार्केट एंड 572 बिलियन EU मार्केट, एंड लाइक टेक्सटाइल सेक्टर only good business can be able to stand against the all odds and grow. I have told you फार्मा में रेगुलेटरी कंट्रोल बहुत ज़्यादा है इन बोथ ऑफ दिस टू मार्केट, ओनली द बिग कंपनीज एंड गुड कंपनीज कैन विथस्टैंड। सो आउट ऑफ 18 स्टॉक्स इन द लास्ट 1 वीक जो रैली शो किया था मार्केट में, ओनली 8 हैव द गुड बिजनेस, मतलब उनके पास वो कैपेबिलिटी है, दे कैन साइन इन द मार्केट एंड गोइंग फर्दर टू कवर दिस 80 बिलियन का जो मार्केट है उसमें मार्केट से ले सकते हैं। तो आई होप यू ऑलरेडी हैव दिस 8 फार्मा सेक्टर स्टॉक्स। आपके पास नहीं होगा तो कमेंट पे लिखिए आई नीड देम। इंजीनियरिंग एंड केमिकल स्टॉक्स के लिए यू में $1 ट्रिलियन का मार्केट ग्रैब होना है, मतलब $1 ट्रिलियन इज द मार्केट साइज इन EU फॉर इंजीनियरिंग एंड केमिकल्स। नाउ लास्ट 1 वीक में 35 स्टॉक्स हैव शोन द पॉजिटिव परफॉर्मेंस, जिसके पास पॉजिटिव बिजनेस है, मतलब बिजनेस हेल्थ भी ठीक ठाक है। बट आपको पता है कितना स्टॉक रैली शो किया था? 70। बी केयरफुल। आप होल्ड कर रहे हो तो राइट इन द कमेंट दैट आई नीड टू चेक। सो देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर दोज ऑटो कंपोनेंट स्टॉक्स जो रैली शो किया था लास्ट वीक में। अराउंड 13 स्टॉक फ्रॉम द ऑटो कंपोनेंट्स दे हैव शोन द रैली।
because India is going to be global auto component hub, because EU का जो luxury cars है, they will get an easy entry in India, just only 10% of tariff. So for them to make their parts and auto ancillaries and all this stuff, auto component manufacturer has a tremendous bright future. Now, is that ensures that all these auto component parts manufacturer will continuously get the benefit and got the rally in the market? Answer is no. तेरा जो stocks last week में rally show किया था, उसमें 5 के पास solid business है, बाकी सब का business is either suffering or they have a problem. Okay, so that means that the most promising sector after the budget and the deal that is announced doesn't ensure money making for you if you blindly invest in them. So what you need the experts' advice. If you want the name of all these stocks from these sectors and subsectors who are going to get benefited from the EU and US trade deal in India and have a performing stable business with tremendous potential, please connect with me by clicking the link given in the description section so that I can share those with you. You can also get associated with me to get the guidance regarding these stocks too. So दोस्तों, ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, ये इंडिया का ग्लोबल पावर मूव है. ट्रंप ने प्रेशर बनाया, इंडिया ने वो प्रेशर को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया. सो स्मार्ट इन्वेस्टर कौन होते हैं? स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं जो जियोपॉलिटिक्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं. क्या आपने ये सब स्टॉक एनालिसिस किए हो और बजट के साथ डील का जो रिलेशन है, जैसे मैंने बताया, क्या आप भी इसमें सहमत पोषण करते हो? If you are agreeing with me, please type in the comment box that I agree. If you do not agree with me, please share what is the outcome of your analysis in the comment box. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, please like, share and subscribe KnoGrowInvest channel and click the bell icon to get the notification early. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ न्यूज नहीं, I decode money and I give you strategy. Thank you and see you in the next video.